Good morning, students. Welcome to you in e-learning classes of Standard 7 is organized by Modern English School, Nevada. I myself, Revti Vaman, mathematics teacher of Modern English School, New Area, Nevada. Students, today I shall solve exercise 14 of chapter 14, properties of parallel lines. One question is written here, question number 2. But solve before this question, some matter for concept. स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस चैप्टर को कंसेप्ट को एक बार मैं फिर समझा देता हूं। ये यहाँ पे L पैरेलल M है। L और M दो पैरेलल लाइंस हैं जिसको T ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। कोई भी पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंगल्स बनते हैं। ये जो एंगल हैं इनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल का भी प्रॉपर्टी मिलता है। जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अदर लीनियर पेयर भी इसमें है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 1 और एंगल 1 प्लस 4 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 6 प्लस 7 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 5 प्लस एंगल 8 और एंगल 8 plus 5 equal to 180 degree. These are the pair of linear pair. Now, three important things. सबसे important तीन बात है जो इसमें ध्यान रखता है। पहला लिख देते हैं, pair of corresponding angle, pair of corresponding angles. So pair of corresponding angles equal to angle 1 equal to angle 5, angle 2 equal to angle 6, angle 3 equal to angle 7 and angle 4 equal to angle 8. So angle 1 equal to angle 5, angle 2 equal to angle 6 and two other pairs, angle 3 equal to angle 7 and angle 4 equal to angle 8. And second important thing, pair of alternate interior एंगल्स, इसको भी जानना। पहले पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 इक्वल टू 5, 2 इक्वल टू 6। 1 इक्वल टू 5 देखने में भी लगता है और 2 इक्वल टू 6 भी देखने में लगता है, सेम लगता है दोनों। 3 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल लगता है और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 ये भी दोनों सेम लगता है। अब देखना है पेयर ऑफ अल्टरनेट मतलब उसका उल्टा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इस तरफ, एंगल 5 इस तरफ, एंगल 4 इधर, एंगल 6 इस तरफ। सो अल्टरनेट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5
or angle 4 equal to angle 6. And third term is co-interior angle. Co-interior angles, constitutive interior angle. Angle 3 प्लस एंगल 6, ये दोनों का सम, एंगल 3 और एंगल 6 ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ, इंटीरियर अंदर का, पैरेलल लाइन के अंदर एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, pair of corresponding angles, pair of alternate interior angles and co-interior angles, constitutive interior angles। ये तीन को याद रखना और इसके हेल्प से ये सब सोल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करना। In question number 2, in the given figure L parallel M, in the given figure L parallel M, T is a transversal. If angle 1 and 2 are in the ratio 5:7, so let angle 1 equal to 5x and angle 2 equal to 7x. Angle 1 equal to 5x, angle 2 equal to 7x. So find the angles, find the measure of each of the angle 1, 2, 3 and 8. So first of all, angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree. Just a study, just known. Angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree by linear pair. That implies angle 1 is 5x plus angle 2 is 7x equal to 180 degree. That implies 12x equal to 180 degree. That implies x equal to 180 degree by 12. 1 time 12. 8 minus 2, 6. 6 and 0, 16. So 12 5 ja. X equal to 15 degree. So find angle 1 equal to 5x equal to 5 into 15 degree. Five into 15 degree equal to 25 degree. Angle 2 equal to 7x equal to 7 into 15 degree equal to 105 degree. Answer. Now find angle 3. Angle 3 equal to angle 1. Angle 3 equal to angle 1. Angle 3 equal to angle 1. Angle 1 is 75 degree. Answer. By VOA. Sorry. VOA. Now next is find the angle 8. Angle 8. So angle, first of all find angle 4 equal to angle 2 equal to 105 degree. VOA. Angle 4 equal to 2 equal to angle 4. 105 degree VOA.
Therefore, angle 8 equal to angle 4 equal to 105 degree. 105 degree. Answer. By corresponding angle. By corresponding angles. Understand and write it. Students, next question is question number 4 of exercise 14. In this question, in the given figure, L parallel M, if S and T be transversals such that S is not parallel to T, find the value of X and Y. Students, suppose the name of this angle is angle 1 and this angle is angle 2. So find, since L parallel M and S is a transversal. S is a transversal. So angle 1 equal to 50 degree by VOA. Angle 1 equal to 50 degree by VOA. Now X plus angle 1 equal to 180 degree by co-interior angle. That implies X plus angle 1 is 50 degree equal to 180 degree. That implies X equal to 180 degree minus 50 degree equal to 130 degree answer. Next, we have to find by equal to. So, L parallel M, since L parallel M and T is a transversal. T is a transversal. So angle 2 equal to by angle 2 equal to angle by VOA. Now angle 2 plus 65 degree equal to 180 degree by co-interior angles. That implies by equal to angle 2 equal to by. So by equal to 180 degree minus 65 degree equal to 115 degree. Answer. Understand and write it. Friends, next question is question number 7. In this question, in the adjoining figure, it is being given that AO parallel CD and OB parallel CE and angle AOB equal to 50 degree. Find the measure of angle BOD. Find the measure of angle ECD.
find the measure of angle ECD. Find the measure of angle ECD. Now here, since AO parallel CD, AO parallel CD, therefore angle CDB, angle CDB equal to angle AOB equal to 50 degree corresponding angles. Corresponding angles. Now the value of this angle is 50 degree. Now find angle ECD. So since OB parallel CE, OB parallel CE, so angle ECD plus angle CDB equal to 180 degree by co-interior angle. By co-interior angles, that implies angle ECD plus angle CDB equal to 50 degree equal to 180 degree. That implies angle ECD equal to 180 degree minus 50 degree equal to 130 degree answer. Understand and write it. Students, next question is question number 8. Today it is the last question. In this question, in the adjoining figure, it is a given that AB parallel CD. AB parallel CD. Angle ABO 50 degree. Angle CDO 40 degree. Find the measure of angle BOD. So draw EOF. Draw EOF. Draw EOF parallel AB parallel CD. EOF divided angle BOD into two parts. Name of this part is angle 1 and angle 2. Now, since AB parallel EOF, AB parallel EOF, therefore angle 1 equal to 50 degree by alternate interior angles. Now since CD parallel EOF, therefore CD parallel EOF, so angle 2 equal to 40 degree. Angle 2 equal to 40 degree. It is also by alternate interior angles. Now angle BOD equal to angle 1 plus angle 2. Angle 1 plus angle 2 equal to angle 1 is 50 degree
plus 40 degree equal to 90 degree answer. Students, today your homework is solve exercise 14, question number 1 to 8. Thank you. That's all.